Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another program of Kids Time, and as always, we hope the viewers all over the world are enjoying this program. Viewers all over the world can join in with us by following the Waqfin and Nol syllabus, which is what we use to teach the children here and the children all over the world from that Waqfin and Nol syllabus. جی جیسا کہ شاہزبہ جی نے بتایا کہ ہم اپنے پروگرام میں وقف نو کے سلیبس سے سارا کچھ لیتے ہیں، بچے یاد کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں. تو وہ سارے بچے جو ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی وقف نو کے سلیبس سے یاد کر سکتے ہیں، ٹی وی پر دیکھ کر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. تو شروع کریں آج کا پروگرام. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کی پہلی 17 آیات یاد کر رہے ہیں، اور آج انہی میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ بچے ہمیں سنائیں گے، ان کی ٹرانسلیشن بھی. کون سب سے پہلے شروع کرے گا؟ آج بچے 11 سے 14 جو ہیں آیات ہمیں سنائیں گے. ناہیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اگلی آیات کون سنائے گا؟ جی بریرہ. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جزاک اللہ. ٹرانسلیشن. جی اسرا. ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے باوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. خبردار، یقیناً وہی بے وقوف ہے لیکن وہ نہیں جانتے. He's going to give us the translation in English. In their hearts was the disease, and Allah has increased the disease to them. For them is a grievous punishment because they lied. And when it is said to them, create not disorder on the earth, they say we are only promoters of peace. Beware, it is surely they who create disorder on the earth, only they perceive it not. And when it is said to them, believe as other people have believed, they say, shall we believe as the foolish have believed? Beware, it is surely they who are foolish, but they do not know. جزاک اللہ. جی اب باری ہے حدیث کی. He's going to do Durood today. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. He's going to do this. حدیث. حائزہ. افشوا السلام.
जी, और ट्रांसलेशन मुदब्बिर? आपस में अस्सलाम वालेकुम का रवाज दो। जी, आपस में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को रिवाज दो। Who's going to tell us something in English? Sahib? Spread salam. Spread salam. So what does that mean? How do you spread salam? Yes, Nasir. It means when you meet somebody, you have to say salam. That's right. जी, आपको पता है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते थे तो उनकी कोशिश होती थी सबसे पहले सलाम करें, और वो दूसरों को भी इसकी तालीम देते थे कि आप जब भी किसी से मिलो कोशिश करो कि सलाम में पहल करो। तो जो बच्चे थे वो उनके साथ बहुत दोस्ती होती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो जब वो खेल रहे होते थे और वो वहाँ से गुज़रते थे तो आप जल्दी से सबको सलाम करते थे। तो एक दिन बच्चों ने सोचा कि इस बार जो है ना, उनके आने से जैसे ही वो आएंगे हमने उनको सबसे पहले सलाम करना है। तो वो सारे दरख्तों के पीछे छुप गए। जब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि बच्चे नज़र नहीं आ रहे, तो उनको समझ आ गई कि ये सारे छुपे हुए हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे सारे दरख्तों से निकलकर बाहर आ गए और उनको कहने लगे कि हमने आज आपको सरप्राइज़ देना था, हमने आज आपको पहले अस्सलामु अलैकुम कहना था। तो आप देखिए उस वक्त में बच्चे कितनी कोशिश करते थे कि वो पहले सलाम करें। तो आप सब में भी यही जज्बा होना चाहिए कि जब भी आप शर्माने वाली कोई बात नहीं, अक्सर लोग शर्माते हैं, बच्चे कहते हैं ओह मैंने नहीं कहना, मैं चुप जाऊँ कहीं पे, मुझे सलाम ना कहना पड़े, ऐसा होता है ना, बच्चे शर्माते हैं दूसरों को सलाम करते हुए। आपको पता नहीं है कि कितना सवाब है अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातें को, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दो तो अल्लाह मियाँ कितनी बरकत डाल देता है ना। Atyabaji was telling us that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam always tried to be the first to say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to the people that he met, and he encouraged everyone else to do the same. And she was telling us about an incident where the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to come into a place and there used to be lots of children, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam always used to be the first to say assalamu alaikum. So one day the children thought, no, today we're going to be the first and we're going to try it and say it before him. So they hid behind the trees, and the Holy Prophet ﷺ came forward, and he couldn't see the children anywhere, and he guessed that that's what the plan was. So he said in a very loud voice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And the children came out and they replied, and they said that we were trying to be the first one to say it, but the Holy Prophet ﷺ got there first. And so we should always remember that we should always try to be the very first person to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh whenever we go somewhere. Yes, Brera. When you go into a meeting or something, you could say Assalamu alaikum out loud, but you have to also go up to the people and say Assalamu alaikum to them as well. And also when जब आप कहते हो अस्सलाम वालेकुम, फिर आप पर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमत होती है. Yeah, that's right. So when you go into a room, you can say assalamu alaikum loudly to everybody there, but it's even better to go to each person and say assalamu alaikum separately. Yes, Isa. And also, when you say Assalamu alaikum to somebody, you're also giving them blessings, because it means peace be on you. Yeah, we're asking for Allah to give His peace and blessings upon that person. और अब बारी है जनरल नॉलेज की। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हम पिछले कुछ प्रोग्राम से जो है वो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने उनकी नबूवत से पहले की लाइफ के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद में, और फिर कुछ जंगें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लड़ी, उनके बारे में ज़िक्र किया। आज भी हम एक जंग का ज़िक्र कर रहे हैं जो कि ओहद की जंग थी, जो कि मुसलमान ये जंग हार गए थे कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या ये कह लें कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को एक जगह पे खड़े होने का कहा तो वो समझे कि शायद वो जंग जीत चुके हैं, तो वो अपनी जगह से हिल गए और वो दूसरी जगह पे आ गए, और जो कुफार थे, जो दूसरी कौम थी, लोग थे, वो उन्होंने उस साइड से हमला कर दिया। और इसी जंग में जो है वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दांत भी शहीद हुए थे। तो आप में से कौन बताएगा आज
इसके बारे में। जी बरीरा। हमारे पास 700 थे और मैकन्स के पास 3000 थे और एक वाक़या होया था कि दो बच्चे वो लाइन में खड़े हुए थे और एक ने कहा था कि मैंने इस जंग में करना है और फिर एक और लड़का था उसका नाम था राफे। एक था पहले जो राफे था और दूसरा असमार। जी असमान ने कहा था कि मैं इससे और prophet I'm powerful than Rafe और होली प्रॉफिट कहते कि आप एक दफ़ा फिर रेसलिंग मैच करो। फिर उन्होंने किए थे और फिर होली प्रॉफिट ने कहा था कि अच्छा आप दोनों फाइट कर सकते हो, दोनों जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे नौजवान टीनेजर्स जो थे वो आगे आए थे, लेकिन आपने उनको वापस मदीना भिजवा दिया था और आपने कहा था कि अभी तुम जंग के काबिल नहीं हो। लेकिन ये दो बच्चे जो थे वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि वो जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। जी, I was telling us about an incident at this battle where lots of young boys wanted to fight for the Muslim army, but the Holy Prophet ﷺ sent them back to Medina saying that they weren't capable of fighting, they were too young. But these two boys were really wanted to fight, and they wanted to fight, and they said to the Holy Prophet ﷺ that we want to fight in this, and the Holy Prophet ﷺ allowed them to do so. इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जब हमें किसी जगह पे खड़ा किया जाता है या जब हमें कोई काम दिया जाता है तो हमें उसको ओबे करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हमारे आका प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि जब तक मैं इशारा ना दूं आपने वहाँ से नहीं हिलना, लेकिन वो अपनी जगह से हिल गए। बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े भी रहे थे, लेकिन वो इतने काफ़ी नहीं थे कि वो उसको उनका मुकाबला कर सकते या दुश्मनों को रोक सकते। There's a very important lesson that we learned from the Battle of Uhud. The Holy Prophet ﷺ had told a number of his men, 50 of his men, to stay in a particular place so that if the enemy attacked from that side, that they would be able to defend it. And these 50, they saw that the Muslims were winning the battle, and so they decided that they were going to move from that place. And because they moved, the Meccans saw that they could attack at this place, and they did so. And there were lots of casualties from among the Muslims because of that. It's a very important lesson that we learn here, and it's the Arabic word is itaat, or obedience in English. And that is when you're told to do something by the Prophet, by a Khalifa, by somebody in position, in authority over you, you must listen to that. Even if you don't know the reason why you're being asked to do that, even if you think it's the wrong decision, when somebody in authority over you tells you to do something, you must listen to it. And that's why we have a system of the Nizam of the Jamaat, where you've got the Khalifa and then you've got people in position and responsibility over you. And if they tell you to do something, then we listen. Even if we don't agree with them, even if we think what they're saying is not right, we listen and we obey. And that's very important in everything that we do, including at school. If your teacher tells you something, you listen. When we're praying, when we're doing salat, even if the imam makes a mistake and it doesn't rectify it, we still follow that mistake. And that's all to do with obedience. And that's why, in this case, the people there, they didn't obey. The Holy Prophet ﷺ said to them to stay until I tell you that you can move. But they didn't obey, and then that was the result of that. जी, हमने अपने प्रोग्राम में एक नया सिलसिला शुरू किया था। हम बच्चों को एक किताब देते हैं पढ़ने के लिए और फिर हम नेक्स्ट वीक उसको डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में। इस बार हमने जो बुक दी थी बच्चों को वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में थी। तो बच्चे आज हमारे साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने इसमें क्या पढ़ा। तो कौन मुझे बताएगा कि शुरू से करते हैं कि कब वो पैदा हुए, ठीक है? तो हसन आप बताएंगे, कौन बताएगा कि कब पैदा हुए? वो पैदा हुए 13 फरवरी 1835। जी, और उनके साथ कोई ट्विन्स भी थी सिस्टर? He was born with twin sisters and they didn't survive. One twin sister and she didn't जी, survive. ओके। और कौन बताएगा उनके बाबा का नाम, उनकी मामा का नाम? मुदब्बिर।
हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा। जी, और उनकी अम्मी का नाम? Isa? चिराग बीबी। जी, You अच्छा। can tell us something about the education. Did the Promised Messiah go to school? He stayed at home and read Quran and read namaz and did work. What kind of things did he learn at home? Sahib? He learned medical, philosophy, the Holy Quran, Persian books and Arabic grammar. Yeah, so the basic things that he learned. Who can tell us about the first job of the Promised Messiah? Where did he work? Mudabbir? Deputy Commissioner at Sialkot. Yeah. And why did he leave that job? Does anyone know? Nahia? He wanted to spend more time praying alone. Yeah. Okay. And what did he do? What did he spend his time doing in Qadian? वो नमाज और कुरान पढ़ते थे. Yeah. And he used to spend most of his time away from other people and in prayer and worshipping Allah. और हदीस की बुक्स, रिलीजियस लिटरेचर, ये सब वो करते थे, पढ़ते थे. ओके, उनकी पहली शादी कितनी उम्र में हुई थी? He was 15 years old. जी. That's right. And what was the name of his first wife? Hassan? हुमदा बीबी. हुर्मत बीबी. जी. और कितने बच्चे हुए थे उनमें से उनके? तलहा? 2. ओके, कौन नाम बताएगा उनके? ईशा? Mirza जी, Sultan मिर्ज़ा Ahmed. सुल्तान अहमद. And Barira? Mirza Fazal. मिर्ज़ा फजल अहमद. Good. जी, ये तो हमने उनकी शुरू की लाइफ के बारे में डिस्कस किया. इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में बाकी का उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ और चीज़ें. आज कुछ बच्चे कुछ बना कर लेकर आए हैं जो हमारे साथ शेयर करेंगे. मैंने ये पिक्चर बनाई थी घर. With pastels? अच्छा. असन ने लैंडस्केप बनाया है और जिसमें पाकिस्तान का सूरज दिखाया है. वेल डन, बहुत अच्छा है. और बरीरा क्या लाई है आज? Promised Messiah की. और यहाँ पे वो कहते क्लेम जब होली प्रॉफिट को पता चला था कि Promised Messiah था और यहाँ पे बर्थ और फैमिली बैकग्राउंड और फर्स्ट मैरिज और फर्स्ट रेवलेशन भी उनको मिला था. सेकंड रेवलेशन जब उनको मिला था जब वो Promised Messiah थे और वो था अलैहिस्सलाम भी काफ़ी नब्द हो. और कहते कि उनकी बुक्स भी थी, एक उनने 1880 में पब्लिश किया था. Good. Well done. जी, कितनी अच्छा है आइडिया कि अगर आप किसी के बारे में याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख लें और आप बहुत आराम से इस तरह याद कर सकते हैं और आपको कभी नहीं भूलेगा. जी आयज़ा? मैंने कोशिश की बनाने लेकिन थोड़े टूटे हुए हैं. और ये वाला भी, लेकिन उसके पास आंखें नहीं हैं. ओके, आज तलहा को प्यारे हजूर से कुछ बहुत ख़ास मिला है. तलहा शेयर करेगा आज? ये पेन. तलहा को आज पेन मिला है, देखा? आज मैं आपको सिखा रही हूँ कैलीग्राफी, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को शौक़ होता है डिफरेंट स्टाइल से लिखना. तो ये जो ग्राफिटी का स्टाइल आज मैं आपको सिखा रही हूँ, ये बहुत फेमस है. अक्सर आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर भी कुछ लोगों ने स्प्रे के साथ लिखा होता है. लेकिन बेसिक आपको पहले पेंसिल से अगर आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप आराम से इसको स्प्रे के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं. तो मैं इसकी शुरू करती हूँ. मैंने एक पेपर पे लाइंस लगा लिए हैं एहतियातन के जो भी मैं लिखूं वो स्ट्रेट लिखा जाए. आप कुछ भी ऐसे बना के आप अपने रूम में लगा सकते हैं या आप कहीं पे भी लगा सकते हैं. तो जस्ट एक रफ सा आइडिया आप लोगों को देने के लिए मैंने
کچھ اس کو ڈیزائن بھی اس کے ساتھ بنا دیا ہے. You're doing it with a pencil? جی. Is this difficult to do? No. The little ones as well? جی. یہ دیکھیں میں نے سمپل جیسے بچے لکھتے ہیں ویسے لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جو میں نے لائن لگائی تھی اس کے ساتھ میں نے ایسے سرکل سے کچھ ایسے لائنز ریٹروگرافیکل لائنز ہی میں نے اس کے ارد گرد بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی لائن میں نے لگائی تھی اس کے ساتھ جیسے پیٹلز ہر سائڈ سے نکلتی ہیں ایسے ہی. Maybe we'll get more boys joining in this time. If there's less of doll making and less flowers. Less flowers? Oh, Mommy, اب جو میں نے لاسٹ لائن لگائی تھی جو پہلی والی تھی وہ اس کو چھوڑ کے جو میں نے سائڈوں پہ لگائی تھی میں اس ساری کو ہائی لائٹ کر دوں گی اور جو میں نے بیسک لائنز لگائی تھی وہ ساری میں ریس کر دوں گی اس میں سے. Often children are just doodling or writing and things. It's a good thing to learn then, isn't it? میں نے اس کے ساتھ ایک اور ڈبل لائن لگائی ہے کیونکہ یہ اس طرح لگے گا کہ جیسے یہ ورڈ 3D لکھے ہوئے ہیں. 3D کا illusion ہوتا ہے بیسیکلی 2D سرفیس کے اوپر. It looks like it's coming out of the page at you. You're using just a normal marker, black marker. Board marker. اوکے. اب جو میں نے اندر لکھا تھا وہ سارا میں رب کر رہی ہوں. کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. کریونس کے ساتھ آپ کلرنگ کر سکتے ہیں. اندر مارکرز ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. پیسٹلز
جو چیز جس پہ آپ کی سب سے زیادہ گریپ ہے کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ کریں, کیونکہ پھر آپ زیادہ جلدی اور آپ آرام سے کر سکیں گے. یہ میں نے اندر کا سارا ریز کر دیا کہ ہم اس میں تھوڑی کلرنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا سے یہ سمپل مارکرز ہیں, میٹیلک مارکرز. جب گیلے ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ شیڈز بھی نکال سکتے ہیں. جیسے گیلے ہو اگر آپ ساتھ ہی اس کو رب کر دیں ہاتھ سے تو وہ پھیل جاتے ہیں. میں نے ایک اور مارکر کے ساتھ کچھ ہائی لائٹس ڈال دی ہیں بیچ میں. یہ کچھ اس طرح بن جائے گا. آپ اس کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بیسک مقصد جو ہے وہ اس کی ڈرائنگ کرنا سکھانا ہے, یا اس کو بتانا ہے کہ آپ کیسے ڈرا کر سکتے ہیں. باقی آپ اوپر بہت کچھ لگا سکتے ہیں, ربن, بٹنز, گلیٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن بیسک آئیڈیا اس کیلیگرافی کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا کیلیگرافی کا. ہوپفلی نیکسٹ ویک آپ کو کچھ اور سیکھنے کو ملے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا. اوکے, اب باری ہے ای میلز کی. ہمیں میمونہ احمد نے بھیجا ہے فلوریڈا سے. انہوں نے ڈچ میں ہمیں ای میل کی ہے, جس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ انہیں ہمارا پروگرام بہت پسند ہے اور وہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں, اور وہ 5 کلاس میں پڑھتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ای میل آئی ہے امت الکافی کی, اور وہ 10 سال کی ہے. انہیں بھی ہمارا پروگرام بہت پسند ہے. ان کے بہن بھائی بھی یہ دیکھتے ہیں. انہوں نے اردو میں لکھا ہے, اس لیے سمجھنے آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کا کیا نام لکھا ہے. ٹھیک طرح سے ٹائپ نہیں ہوا ہوا, لیکن ان کے بہن بھائی بھی یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. We've had some more emails. This is from family of Jodi Abdul Rashid, Maryam Siddiqa Rashid, Khawla Rashid, Farhan Rashid and Afia Rashid from Germany. And they say, Bismillahir Rahmanir Rahim, love for all, hatred for none. ہمیشہ ہیپی رہے اور ہمیشہ سلامت رہے اور آپ کی عمر دراز ہو, آمین. السلام علیکم. ہم سب کی طرف سے حضور انور کو بہت بہت سلام اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور تمام ساتھیوں کو جو پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, اور جزاک اللہ واسن الجزا. And then we've had another one which is from somebody in Rabwa, Nomana Sara Sultan from Rabwa, and she's saying that she enjoys both Storytime and Kids Time. And we hope the rest of you also enjoy and continue to watch. We've had some pictures as well. This is from Afrasiab Wasim, and it's from Germany. And then and this also, Irfa Wasim from Germany. It's nice that the viewers all over the world are enjoying the program and joining in by sending us. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے kidstime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے MTA International 16 Grayson Hall Road,
पोस्ट कोड है SW185QL लंदन UK। इसके अलावा आप YouTube के ऊपर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमें ईमेल करते हैं कि हमें पिछले कुछ प्रोग्राम में कुछ चीज़ें जो हमने ड्राइंग से रिलेटेड या कुछ डो बनाना सिखाई थी तो उनकी रेसिपीज़ दोबारा पूछते हैं। तो उनके लिए सबसे आसान है कि वो YouTube के ऊपर जाके ये प्रोग्राम देख सकते हैं। यूट्यूब की सर्च बार में टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। आप किसी भी वक्त ये प्रोग्राम देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।